today we'll start. This is actually our last topic from this unit. Okay, and these are the topics: method of variation of parameter. I will fix this time, but mostly it is in between 12 to 2 o'clock. यही दो preferable time मुझे चैट बॉक्स में दिखाई दे रहे थे, तो मैं एक बार आपका टाइम टेबल चेक करता हूँ. अकॉर्डिंगली आई विल शेड्यूल दिस टेस्ट. ओके, नाउ okay, today we'll start the this is actually, you can say, the last type of differential equation. Like, okay, we have started with the first, which is linear differential equation with constant coefficient. Okay, यहाँ से हमने start किया था. Second is actually the Cauchy's linear differential equation, ठीक है, which we need to convert into a linear differential equation with constant coefficient. And then third, actually Legendre's linear differential equation, ठीक है. So these two are the specific type of differential equation which can be converted into a linear differential equation. Now this is your last type, which is symmetrical simultaneous differential equation. This is the symmetrical simultaneous differential equation. So first let us discuss the definition. So a differential equation of the form, so now this is a totally different topic. So a differential equation of the form dx upon p dy upon q dz upon q. Okay, so this type of differential equation here, you can see this differential equation in terms of ratios, and always remember these are not your real number ratios. ये कोई real number के ratios नहीं है. Okay, this is the differential equation which is defined in terms of ratios. This is the differential equation which is defined in terms of ratios, where this p, q, r, these are actually your functions of x, y, z. Okay, for example, if I have to take any random example, then you can take dx upon x square plus y square, okay, which is equal to dy upon x, y, z, which is equal to dz upon x cube, y cube, and z cube. So such type of a differential equation is called as actually the linear differential equation. Sorry, this is called as the symmetrical simultaneous differential equation. So okay, so this type of differential equation is called as symmetrical simultaneous differential equation. And now here also our aim is to find the general solution of the symmetrical simultaneous differential equation. Okay, so the general solution of our differential equation actually contain two functionally independent solution. Okay, actually contain two functionally independent solution. Okay, functionally independent means what? Independent solution roughly, but independent, or I can say independent to two different independent functions. Okay, like say u and v. Functional independence का पार्ट आपने ऑलरेडी M1 M2 में लर्न किया है. Okay, functional independence. Okay, have you checked that? If the Jacobian of uv with respect to xy is, okay, is equal to 0, then it is dependent or independent? Yes, then it is dependent or independent. If Jacobian of uv with respect to xy is equal to 0, then these two functions are dependent or it is independent. Anyone? याद आ रहा है कि नहीं ये कुछ? Then it is called as dependent. Then these two functions are dependent. Means there exists some relation between these two functions. ठीक है? So in this way also you can check whether these two functions are independent or not. But ये आपको ये ऐसा कोई भी पार्ट आपको यहाँ पे नहीं करना है. ठीक है? So let us skip that. So this is so this dx upon p. Okay, we generally call it as first ratio. This dy upon q we generally call it as second ratio, and this dz upon r we generally call it as third ratio. ठीक है? And now let us discuss the methods to solve symmetrical simultaneous differential equation. Okay, so there are only two methods. One is the method of grouping, or I can say the combination. I will tell you one by one. And the second method is method of multipliers. ठीक है? So both methods are there in your syllabus. So just 1 minute. Let me add one student. Okay, so let us start by this first method of grouping. Okay, so these are the only two methods in your syllabus. ज़्यादा कुछ lengthy topic नहीं है. Okay, so always focus on this differential equation. Our aim is to find the general solution of this type of differential equation, symmetrical simultaneous differential equation. So the first method is what? Method of grouping.
Okay. So read this statement carefully, then only will understand the method. Find two ratios. Okay, two ratios means there are only three possibilities. One is dx by p equal to dy by q. This is your first possibility, correct? Second possibility is what? Dy by q is equal to dz by r. This is your third possibility. And what is your last? This is your second, and what is your last? The third possibility is what? This dz by p with respect to dz by r. So these are only the three possibilities for the ratios. Okay, so let me take red. Okay, so find two ratios. Okay, now for these two ratios we have these three possibilities. Okay, but इनमें से कौन सा रेशियो आपको सिलेक्ट करना है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रहा है, in which third variable is absent. Okay, so find two ratios in which your third variable is absent. For example is what? Or can be cancelled. Okay, or maybe by doing some simplification, or maybe by cancelling that variable. If you get a ratio which is free from third variable, that is also okay. Okay, so what is meant by this step one? For example, if I take the first ratio, dx upon p is equal to dy upon q. Okay, so when you select this ratio, if the third variable is absent, तो क्या होता है आपका थर्ड वेरिएबल? फर्स्ट टू रेशियोज में, इन दोनों में आपका थर्ड वेरिएबल क्या होगा? यस, इन दोनों रेशियोज में आपका थर्ड वेरिएबल क्या होगा? व्हाट इज योर थर्ड वेरिएबल? यस, एनीवन? If I want to select this first two ratios, what is your third variable? This is my question. What is your third variable? How many variables are there? X, Y, Z. Three variables are there. So if I select this first two ratios, then your third variable is what? Z. So that Z must be absent in this two ratios. Okay. Similarly, अगर आप second या third ratio लेते हो, dy और dz का ratio लेते हो, तो उसमें क्या absent चाहिए? X must be absent. Similarly, if I take the first and third ratio, so in that case, your y variable must be absent. Okay. So this is your step one. Next step is what? And now, so after selecting this ratio, now solve by using variable separable form. Okay, I hope this part is already there in your M1 and M2, or for the direct second year students. Okay, I think I need to explain this. Okay, so I will explain this variable separable form, and then you will get that first solution. Okay, अभी question बस क्या है? This is only for the direct second year student, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता होगा. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? ओके, अगर आपके पास ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर दैट dx अपॉन y स्क्वायर, मैं सिंपल ले रहा हूँ बस कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, dx अपॉन x स्क्वायर, या आपका सपोज रेशियो आ रहा है. ओके, व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मींस व्हाट? यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ dx. ओके, अगर वहां पे dx एंड dy है, तो dx का जो कोएफिशिएंट है वो आपको x में ही चाहिए. सो यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ dx टू बी फंक्शन ऑफ x ओनली, and the coefficient of dy to be function of y only. This is the meaning of variable separable form. Okay, so similarly, if I take any other ratio, for example, let us take dy upon say z square, मैं similar pattern में लेता हूँ dz upon y square. ऐसा अगर कोई मैं एक और रेशियो लेता हूँ. Okay, so what is the variable separable form? This particular ratio. So for this particular ratio, your variable separable form is what? You have to make the coefficient of dy to be function of y, and the coefficient of dz to be function of z. Okay, that is the meaning of variable separable form. ठीक है? I hope it is clear to everyone now. Variable separable form is what? If the coefficient dx is present in that differential equation, just try to make that coefficient, the coefficient of dx to be function of x. If dy is present in the given differential equation, then just try to make the coefficient of dy to be function of y. And if dz is present in the given differential equation, then just try to make that coefficient of dz to be function of z. Okay. And now what is your next step? Whenever you will get that variable separable form, how you get the solution? क्योंकि आपको करना क्या है? variable separable form में convert करके solution भी calculate करना है ना? So जैसे आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है, हाउ यू गेट दैट करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन? टू गेट दैट करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन यू हैव टू जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. ठीक है, सो यू गेट दैट जनरल सॉल्यूशन, जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. ओके, नाउ हाँ,
सो एंड यूजिंग दिस यू विल गेट दैट फर्स्ट सोल्यूशन. ओके, फिर आपको करना क्या है, मैंने आपको मतलब प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था. ओके, द सॉल्यूशन ऑफ दिस differential equation is actually, or this solution contain two independent or two functionally independent solution. It actually contain the two independent function or functionally independent, like say u and v. So okay, so these other solution of this differential equation is actually the two independent functions. ठीक है, तो इसलिए using step 1 and step 2 you will get only one function or you will get only one value. Okay, how you get that third, how you get that second function, क्योंकि आपको दो वैल्यू जैसे कैलकुलेट करने. ओके, स्टेप 1 स्टेप 2 से आपको एक सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, आपको एक और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. ओके, सो हाउ यू डू दैट, सो फॉर दैट सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन रिपीट दिस सेम स्टेप्स. ओके, सो वही मैंने लिखा है, रिपीट स्टेप 1 and step 2 फॉर अनदर two ratios in a similar manner in which third variable is absent or can be cancelled or you can use. okay, ये important है. यहाँ तक जो भी एक्सप्लेन किया इसका सिंपल मीनिंग क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 को फिर से रिपीट करो एंड फाइंड दैट अनदर सॉल्यूशन. बट समटाइम्स या ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जहाँ पे आपको यू कैनॉट फाइंड दैट रेशियो. ओके, अनदर रेशियो व्हिच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, वहां पे एक ही ऐसा रेशियो एग्जिस्ट होगा विच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल. यू कैनॉट फाइंड दैट अनदर और सेकंड रेशियो विच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल. तो उस केस में क्या करना है, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन ओनली वन रेशियो विच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस हाईलाइटेड पार्ट जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट किया. तो वहां पे क्या दिया है, अगर ऐसा हो रहा है, सो इन दैट केस वी हैव टू यूज दैट फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपने इनिशियली कैलकुलेट किया था. ओके, सो यूज दैट फर्स्ट सॉल्यूशन, इट मींस सिंपली using this first solution. Okay, using this first solution try to eliminate that third variable. So use this first solution and eliminate third variable, yeah, cancel that third variable to find the second solution. Okay, so this whole process I will explain quickly by one simple example. Okay, फिर हम आगे जाते हैं. Okay, so this is your first question. Now I want answer from your side, इसलिए आपको बोलना है यहाँ पे, चैट बॉक्स में मत डालो. So question number 1, solve dx upon y square equal to dy upon x square which is equal to dz upon x square y square z square. Okay, so can anyone tell me a ratio, can anyone tell me a ratio which is free from third variable? बोलो, tell me the first ratio. Just tell me a ratio which is free from third variable. Yes, quickly say it, बोलो. अगर ऐसा कंटिन्यू रहेगा ना तो हाँ, dx अपॉन y square, हाँ, यस, इक्वल टू dy upon x square. dy upon x square. ओके, तो ये इजी था क्योंकि आपको देखकर ही समझ में आ रहा है. ओके, इन दिस रेशियो योर थर्ड वेरिएबल विच इज z इज absent. ओके, सो इन सॉल्यूशन to find the first solution consider first two ratios. Okay, dx upon y square equal to dy upon x square and here your third variable z is absent. Okay, वही आपकी स्टेप 1 थी. आगे आपको करना क्या है, नाउ इन स्टेप 2 you have to first write the variable separable form. Means what, the coefficient of dx must be the function of x square, must be function of x and the coefficient of dy must be function of y. तो मैंने बस क्या किया यहाँ पे, x square को यहाँ पे शिफ्ट किया, y square को यहाँ पे शिफ्ट किया, so that here I will get the coefficient of dx to be function of x and the coefficient of dy to be function of y. Okay, and now what is your next step, ये तो हो गया यहाँ तक. फिर आगे क्या करना है, to find its solution just take the integration on both sides. So which is in variable separable form. Now just take the integration on both sides, that is integration of x square equal to integration of y square. And आपको ये पता ही है, whenever you take any integration you have to add that arbitrary constant. Okay, indefinite इंटीग्रल में आप हमेशा क्या करते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करते हो. ओके, तो ये आपकी रेगुलर प्रोसेस है. सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy. जैसे आप इंटीग्रेशन लेते हो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना है. सो हियर आई डिनोट दैट आर्बिट्री कांस्टेंट बाय c1. ओके, नाउ जस्ट टेक दिस इंटीग्रेशन व्हिच इज x क्यूब बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू y क्यूब बाय 3 प्लस c1. ओके, आप यहीं पे इक्वेशन को फाइनल कर सकते हो, और इफ यू वांट यू कैन सिंपलीफाई दिस इक्वेशन. मींस आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 3 सो इट बिकम x क्यूब
which is equal to y cube. I just multiply this whole equation by 3 plus c1. बट आपको मैंने पहले ही बोला है कि ये जो c1 है ना, ये बेसिकली आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप मतलब ये हमेशा याद रखो कि c1 आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आप उसको फिर से c1 ही लिख सकते हो, और इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज c1 डैश, ठीक है। सो दैट डजंट मैटर कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, बट आर्बिट्री कांस्टेंट को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, स्टिल इट रिमेन एज आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। सो हियर I just write this as x cube equal to y cube plus c1. अभी कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि फिर से c1 कैसे आ रहा है, अगर आप फिर से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप चाहो तो यहाँ पे डैश करो, ओके। बट c1 डैश और c1 ये सारे मतलब एट द एंड इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आप उसको कैसे भी लिख सकते हो, ओके। दैट विल नॉट अफेक्ट योर आंसर, ओके। बट अगर आपको प्रॉपर मैथमेटिकली जाना है देन कंसिडर योर c1 डैश, ठीक है। सो x cube equal to y cube equal to this, और I can write this as x cube minus y cube equal to c1 डैश, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि ऐसे आपको दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, ओके। नाउ फॉर द सेकंड, ऑलरेडी आपने अभी ये रेशियो यूज किया है, सो यू कांट रिपीट दिस रेशियो अगेन, है ना। नाउ फाइंड द अनदर रेशियो सो दैट यू विल गेट दैट सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। सो नाउ कैन एनीवन टेल मी द अनदर अनदर रेशियो व्हिच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल? यस, फर्स्ट टू रेशियो का यूज करके आपने एक सॉल्यूशन कैलकुलेट किया। नाउ यू कैनॉट यूज दिस रेशियो अगेन, सो नाउ टेल मी द सेकंड रेशियो व्हिच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल। बोलो, और which is free from third variable, or which can be free, मतलब after cancelling a few terms maybe that ratio will be free from that third variable, or after by doing some simplification. Yes, bolo, tell me the second ratio. Bolo, it's better that I will ask particularly now onwards. अगर आपको बात नहीं करनी है तो yes, Om Deshmukh, are you there? Tell me that second ratio. Om Deshmukh, अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आपको रिमूव करूंगा। Om Deshmukh, are you there or not? I don't want this. Yes, Pranav Joshi. Pranav Joshi, are you there or not? Yes, sir, yes. हाँ, so can you tell me that second independent ratio? No, sir, तो क्लियर नहीं दिखता। रेशियो में क्या है बेसिकली, अगर मैं ये फर्स्ट टू रेशियो लेता हूँ dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें कौन से वेरिएबल आ रहे हैं प्रणव, कौन से वेरिएबल आ रहे हैं इसमें? x एंड y आ रहे हैं। थर्ड वेरिएबल एब्सेंट, मतलब कौन सा वेरिएबल एब्सेंट चाहिए? z एब्सेंट चाहिए, तो इसमें z है ही नहीं, ठीक है। अभी मुझे एक और ऐसा रेशियो कैलकुलेट करना है, ओके, जिसमें थर्ड वेरिएबल मुझे एब्सेंट चाहिए। सो कैन यू टेल मी दैट रेशियो? दो तो पॉसिबिलिटी है, इफ यू स्किप दिस फर्स्ट एंड सेकंड, दो पॉसिबिलिटी कौन से है? dx अपॉन वाई स्क्वायर के साथ फर्स्ट के साथ थर्ड, एंड फर्स्ट के साथ थर्ड एंड सेकंड के साथ थर्ड। These are the only two possibilities for second ratio. ये कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था क्या ये? These are the only two possibilities. अगर आप इन दोनों में से भी बोलते तो भी मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ, ओके। अगर आपने फर्स्ट रेशियो ये यूज किया है तो सेकंड रेशियो के लिए these are the only two possibilities. इसमें क्या हाई लेवल का मैथमेटिक्स है? अभी आपको क्या चेक करना है कि इनमें से कौन से रेशियो में आपका थर्ड वेरिएबल एब्सेंट हो रहा है ना। अभी आप अगर ये फर्स्ट रेशियो लेते हो, इफ आई कंसीडर द फर्स्ट रेशियो, 1 मिनट, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है? dx एंड dz, मतलब x एंड z का ये रेशियो है। वी डोंट वांट y, तो यहाँ पे मुझे y नहीं चाहिए, बट y कैंसिल ही हो रहा है ना यहाँ पे। सो दिस रेशियो इज फ्री फ्रॉम y, ओके। तो ये रेशियो बेसिकली क्या है आपका? dx अपॉन 1 विच इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या है, इसमें आप चेक करो सेकंड पॉसिबिलिटी में dy और dz का रेशियो। सो हियर वी डोंट वांट x, बट x यहाँ पे ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो
तो आप क्या ले सकते हो, dy अपॉन 1 इज इक्वल टू dz अपॉन वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो बेसिकली देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर सेकंड रेशो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ओके तो इसके बाद हर एक स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होगा। देर आर फ्यू स्टूडेंट्स which may consider this as their second ratio, और there are few students who may consider this as the second ratio, ठीक है। बट वो दोनों आंसर करेक्ट है, क्योंकि एट द एंड मुझे बस दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने, तो ये भी यहाँ से भी मुझे एक सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, लाइक से v। ओके इसको u में कैसे डिनोट कर सकता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ से भी मुझे एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, मुझे वो दो चाहिए। I don't want this all three independent solution, ठीक है। So randomly I will select any one from this two. मैंने अभी पता नहीं मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है। Okay, so here I consider first with third. Okay, so it is totally up to you. मैंने first with third consider किया, आप second with third भी ले सकते हो और solve कर सकते हो. That is also correct. Okay, now dx upon y square is equal to dz upon x square y square z square. This is your the first. So this is the ratio of first and third term. Now from this you can cancel this y square, so it becomes dx upon 1 is equal to dz upon x square into z square, correct? Now so here now you have to convert this differential equation into variable separable form. Okay, now I want this answer from direct second year student, so can anyone tell me the variable separable form for this? क्या है variable separable form? मुझे बस dx का कोएफिशिएंट x में चाहिए, x square dx is equal to 1 upon z square dx. वेरी गुड, दैट इज dz अपॉन z स्क्वायर। ओके तो मैंने बस क्या किया था, यहाँ पे x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, सो दैट यू विल गेट हियर द कोएफिशिएंट ऑफ dx एज फंक्शन ऑफ x एंड द कोएफिशिएंट ऑफ dy एज फंक्शन, सॉरी dz था ना यहाँ पे, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ dz एज द फंक्शन ऑफ z। ओके सो दिस इज योर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आई विल शो यू। एंड नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आगे बस आपको इंटीग्रेशन लेना है। सो इफ आई इंटीग्रेट दिस, so integration of x square dx is equal to integration of dz upon z square plus c2. Now we know that the integration of x square is what, x cube by 3, correct? x raised to n upon x raised to n का इंटीग्रेशन क्या है, x raised to n plus 1 upon n plus 1. Now the integration of 1 upon z square, okay, in general integration of 1 upon x square dx is what, minus 1 by x. These are the standard formulas. So it become x cube by 3 minus 1 by z plus c2. If you want you can simplify this, मैंने बस 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके तो यहाँ पे 3c2 आने वाला है, बट मैंने आपको पहले क्लियर किया कि 3c2 को आप चाहो तो फिर से c2 कंसिडर करो या c2 डैश कंसिडर करो, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। इसके वजह से कोई आपके मार्क्स रिड्यूस नहीं होंगे। एंड नाउ दैट इज योर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ना ही कोई जो आपका प्रीवियस टॉपिक है उस पर ये मेथड डिपेंड है। हियर आई जस्ट वांट सम बेसिक नॉलेज अबाउट द इंटीग्रेशन। ओके सो मतलब ये टॉपिक में ना मतलब कहीं पे आपको ना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज करना है, ना आपको कहीं पे कॉची एलिजेंड्री उनका कहीं पे कैलकुलेशन रिपीट करना है, तो ये कहीं पे भी लिंक नहीं, दिस इज टोटली डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंट idea is there to find its general solution. So I will take one more example. Okay. Question number 2. Dx upon 2x is equal to dy upon minus y, which is equal to dz upon 4x y square minus 2z. Okay. So now can anyone tell me the first ratio? अभी आपको ये solve करना है. So tell me a first ratio which is free from third variable. Yes. dx upon 2x is equal to dy upon minus y. z. Okay. तो ये आपको easily समझ में आ रहा है, this is your ratio which is free from third variable. Okay, so here dx upon 2x is equal to dy upon minus y. And now आपको आगे क्या करना है, to solve this ratio, first write down the variable separable form. Means what, I just want the coefficient of dx to be function of x, वो already है यहाँ पे, coefficient of dy to be function of y, which is also already there. ठीक है, तो ये already variable separable form है. Okay, so यहाँ पे z variable भी आप set है, this is also in variable separable form. So directly take the integration. So on integrating you will get integration of dx upon 2x is equal to minus, you can take outside to that integral, integration of dy upon y plus c1. Okay, c1 is the arbitrary constant, and we know the standard result that integration of 1 upon x dx is actually log of x. ठीक है, so it become
1/2 ln of x इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ y प्लस c1. ओके, यू कैन मतलब आप यहीं पे इक्वेशन को छोड़ सकते हो और यू कैन फाइनलाइज दिस एज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, और इफ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई दिस. ओके, आगे क्या क्या सिंप्लीफिकेशन इसमें होगा, यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 2. सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड है. इफ यू वांट यू कैन डू दैट सिंप्लीफिकेशन, इफ यू डोंट वांट यू कैन फाइनल दिस एज योर फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. सो ln x इज इक्वल टू -2 ln y प्लस यहाँ पे 2c1 आने वाला है. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट डायरेक्टली इट एज c1. नाउ दिस आई कैन राइट इट एज ln x प्लस 2 ln y. मैं अभी के लिए इसको c1 डैश करता हूँ. ठीक है, नाउ दिस आई कैन राइट इट एज ln x प्लस आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, ये जो भी नंबर है वो y के पावर में जाता है. सो ln y स्क्वायर विच इज c1 डैश. आपको एक और रिजल्ट पता है दैट log ऑफ a प्लस log of b is equal to log of ab. ठीक है, this is also standard result. So this can be written as ln xy square is equal to c1 dash. Okay, you have to take here anti-log on both side. Anti-log का मीनिंग क्या होता है, log यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में जाएगा. So xy square equal to v raised to c1 dash. फिर से ये कोई तो नंबर ही है, आप उसको चाहो तो c2 से डिनोट कर सकते हो या कोई और नोटेशन से आप डिनोट करो, कोई और नोटेशन से. इट्स बेटर टू कंसीडर हियर c2. ठीक है, ये डिपेंड ऑन यू. मैंने सारी जगह पे एक ही नोटेशन यूज किया c1 क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, आप उसको कैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सो योर फाइनल आंसर इज xy स्क्वायर इक्वल टू c2. आई विल शो यू दैट फर्स्ट. वही मैंने सिंप्लीफाई किया एंड देन फिर आई कंसीडर दैट फाइनल आंसर एज xy स्क्वायर इक्वल टू c1 ही लिखा है मैंने क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट को मैं चेंज नहीं कर रहा. ठीक है, एंड नाउ आई वांट दिस सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. ओके, सो there are only two possibilities for second independent solution क्योंकि आपने first two ratios को already use किया है. ठीक है, so for this second independent for the second ratio we have only two possibilities. One is you can take the first ratio with the last, you can take this second ratio with this last ratio dz upon 4xy square minus 2z. Okay, now can anyone tell me how I get that second ratio which is free from third variable? क्या करना होगा, बोलो. Any idea or any hint? By putting 4 square is equals to c1. Very good. ठीक है, ये आपको मैंने इसलिए पहले ही क्लियर किया था कि ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आने वाले. ठीक है, ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स आने वाले जहां पे सेकंड रेशियो में आपको थर्ड वेरिएबल आपसे नहीं दिखाई देगा. जैसे आप देखो फर्स्ट में, देखो इसमें आप चेक करो x एंड z का इक्वेशन है. ओके, और यहाँ पे आपको y नहीं चाहिए बट y यहाँ पे आ रहा है. सो दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो दिस इज नॉट अ रेशियो व्हिच इज फ्री फ्रॉम थर्ड वेरिएबल. यहाँ पे भी आप देखो y और z का इक्वेशन है. सो हियर वी डोंट वांट x बट x यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे जगह पे आपको क्या करना है ना, अगर आपको वो सेकंड रेशियो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है. ओके, सो देयर इज ओनली वन चॉइस. आपके पास एक ही चॉइस है फिर इस केस में. क्या है, जो आपने फर्स्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था. ओके, या आपने जो फर्स्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट किया था, यूज दिस वैल्यू डायरेक्टली इन वन ऑफ दिस रेशियो. अब इसके बाद में मैं रैंडमली सिलेक्ट करने वाला क्योंकि आपके पास xy स्क्वायर की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज c1, वो कांस्टेंट है. तो मैं क्या करता हूँ, xy स्क्वायर को रिप्लेस करता हूँ. अभी के लिए आप इमेजिन करो अगर मैं इसकी जगह पे c1 रख देता हूँ ना. ओके, तो dx और x एंड z के रेशियो में कहीं पे भी y का टर्म नहीं आएगा. ओके, 4c1 minus 2z आएगा. मींस दैट दिस रेशियो इज फ्री फ्रॉम y. ठीक है, सिमिलरली हियर आल्सो इफ यू रिप्लेस xy स्क्वायर बाय c1 विल गेट अ रेशियो व्हिच इज फ्री फ्रॉम x. ओके, तो दोनों में से आप कोई भी एक पॉसिबिलिटी ले सकते हो. सो हियर आई कंसीडर फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैंने ये लिया शायद. ठीक है, so dx upon 2x is equal to dz upon 4xy square minus 2z. Now this ratio is not free from third variable, so for that just put the value of equation 1 here. So you will get xy square. Okay, मैंने क्या किया है शायद. ओके, डायरेक्टली भी रिप्लेस कर सकता था, जरूरत नहीं थी. ओके, डायरेक्टली ये स्टेप चेक करो आप. सो dx upon x. ओके, ये 2 आप ये भी कैंसिल कर सकते हो. दिस 2 कैंसिल विद दिस, तो यहाँ पे 2 ये रहने वाला है और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा. And now this replace xy square by c1 minus z as it is. So this is your final differential equation. Now after this we have to convert this into a variable separable form.
बट ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है क्योंकि dx का कोएफिशिएंट x में आ रहा है, dz का कोएफिशिएंट z में दिखाई दे रहा है. सो दिस इज ऑलरेडी in terms of variable separable form. Now just by taking integration, that is on integrating dx upon x is equal to dz upon 2c1 minus z plus c2. Okay, तो फर्स्ट का तो सिंपल है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन क्या है, इट इज एक्चुअली log of x. ठीक है, सेकंड का कैसे आ रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, स्पेशली फॉर द डायरेक्ट सेकेंडरी स्टूडेंट. ओके, आपको एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपको मैं देता हूँ. ये एक्चुअली चेन रूल से भी देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्लेन दिस, बट मैं आपको एक सिंपल रिजल्ट से बोलता हूँ. एक रिजल्ट है इंटीग्रेशन में, दैट f dash of x upon f of x dx इज एक्चुअली log of डिनोमिनेटर. ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट है. अभी आप यहाँ पे चेक करो, हियर इन दिस केस dz अपॉन 2c1 माइनस z में जो आपका डिनोमिनेटर उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 2c1 का 0 माइनस dz आपका डेरिवेटिव आने वाला है. ओके, दैट इज ऑलरेडी देयर इन न्यूमरेटर, बस आपको माइनस एडजस्ट करना है. सो इफ आई एडजस्ट दिस माइनस साइन देन इट बिकम, then the derivative of denominator is there in numerator, therefore this can be written as log of denominator, that is 2c1 minus z. ठीक है, वही मैंने किया है यहाँ पे. and now plus c2 as it is. Now at that replace c1 by its original value which is x into y square. So replace by its original value and ओके, मैंने उससे पहले इसको सिंप्लीफाई किया है, सारे एल एन में कंसिडर करके एल को कैंसिल किया है. ओके, दिस इज log ऑफ a प्लस बी. आपको पता है आर्बिट्री कांस्टेंट c1 को आप ln c1 भी लिख सकते हो, या आपने कहीं पे ना कहीं पे लर्न किया होगा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन. अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, यू कैन पुट डायरेक्टली दैट वैल्यू हियर, c1 की वैल्यू पुट करो एंड यू कैन मतलब दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन. थ्योरी में कोई इशू नहीं होता, एमसीक्यूज में ये इशू हो जाएगा. ओके, and now just put the value of c1 by its original value. This become your second independent solution. but generally जहाँ पे log के टर्म्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे जनरली आपको सिंप्लीफिकेशन करना है. ठीक है, तो ये स्टेप्स आप फॉलो करो, जितना हो रहा है उतना करो, अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी. नाउ ओके, just by putting c1 is equal to x y square you will get that second independent solution. Okay, we'll take one more example. Solid dx upon 1 is equal to dy upon 3. Okay, again you can see in this first two ratios, यहाँ पे कहीं पे भी z का टर्म नहीं है. So this is your ratio which is free from third variable. So take that as your first ratio. Okay, ये already variable separable form है क्योंकि यहाँ पे ना x है ना y है. ठीक है, जो भी है वो आपका variable separable form है. ठीक है, so directly integrate करो, you will get dx upon 1 equal to dy upon 3 plus c1. Okay, आपको पता है dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, c1 as it is. So this become your first ratio. आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो. So I think this can be written as ये क्या हो सकता है सिंप्लीफाई, 3x minus y is equal to c1. बट ओके, बट मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो थर्ड रेशियो वहाँ पे y minus 3x दिखाई दे रहा है. ओके, ठीक है, मेरा यहाँ पे 3x minus y आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे चेंजेस करके रख देता हूँ. So if I multiply this by minus sign, you will get y minus 3x as minus c1. बट आपको पता है minus c1 can be written as c1 again or c1 dash if you want. ठीक है, so वही शायद मैंने किया है यहाँ पे नीचे. This is actually 3x minus y equal to c1. But since in that third ratio here you can see the term y minus 3x, so just to adjust this term, I multiply this equation by minus sign, then we get y minus 3x as c1. मैं सारी जगह पे c1 ही लिख रहा हूँ just to avoid this simplification, क्योंकि it is a meaningless simplification. Okay, so y minus 3x as c1. Okay, and now अभी मुझे प्रीवियसली क्या मिल रहा था, y minus 3x as c1. तो फर्स्ट एक रेशियो तो आपका हो गया. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द सेकंड रेशियो. बट जब आप सेकंड रेशियो सिलेक्ट करोगे, ओके, उसमें आप इसके जगह पे क्या इमेजिन करो, इंस्टेड ऑफ दिस यू जस्ट कंसीडर c1. ठीक है, और आपको क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे dz का जो टर्म है वो पूरा z में जाएगा, बिकॉज नाउ दिस टर्म इज कांस्टेंट. मींस फॉर द सेकंड रेशियो यू कैन टेक dx विद dz, ये भी आप ले सकते हो, और यू कैन टेक dy विद dz. सो देयर आर अगेन टू पॉसिबिलिटीज. ओके, आप कोई भी एक रैंडम पॉसिबिलिटी ले सकते हो. सो अगेन हियर आई कंसीडर फर्स्ट विद थर्ड. So dx upon 1 equal to dz upon this, but right now it is not free from third variable. But if I replace this y minus 3x by c1, then it is free from that third variable. So dx upon 1 is equal to dz upon 5z plus tan of c1. Now since this is in variable separable form, you already variable separable form है, so just by taking the integration you will get that solution.
ठीक है। अभी मुझे इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करना है। dx का x आता है और यहाँ पे मैंने आपको एक रिजल्ट ऑलरेडी दिया है कि जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है अगर उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है देन योर इंटीग्रेशन इज log ऑफ डिनोमिनेटर, करेक्ट। यहाँ पे आप चेक करो 5z प्लस tan c1 का डेरिवेटिव क्या आता है, द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 5 into dz प्लस 0 सो विच इज ऑलरेडी देयर इन न्यूमरेटर, बस आपको 5 एडजस्ट करना है। सो 5 से मल्टीप्लाई भी करो, 5 से डिवाइड भी करो, सो इट बिकम 1/5 log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c2 एज इट इज। नाउ रिप्लेस c1 बाय इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, एंड कीप दिस टर्म्स एज इट इज। कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज योर सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ओके ओके, इज देयर एनी डाउट इन दिस फर्स्ट मेथड? Any doubt? Okay. Any doubt in first method? या कोई पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आइडिया सिंपल है, जस्ट यू हैव टू फाइंड अ रेशियो व्हिच इज p फ्रॉम थर्ड वेरिएबल। ओके ओके ओके, नो डाउट। सो आई विल गो फर्दर। हाँ, नाउ सेकंड मेथड इज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। अभी ये थोड़ी बहुत कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट जा सकती है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है, इसमें आपको वो मल्टीप्लायर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। सो वो डिपेंड है आपके लॉजिक के ऊपर कि आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हो, ओके। इसलिए मे भी कुछ स्टूडेंट को थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट जा सकता है, बट मेथड सिंपल, ओके। आई विल एक्सप्लेन दैट मेथड फर्स्ट, मे बी ये कवर होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, ओके। सो कंसिडर a given symmetrical simultaneous differential equation. So we know that this is our given differential equation. Our aim is to find the general solution of this, okay. अब इस एक्चुअल मेथड क्या है, here you have to choose or you have to select or you have to find the multipliers L, M, N. अभी ये मल्टीप्लायर से मतलब ये नंबर्स नहीं है, ये मल्टीप्लायर्स आपके फंक्शन भी हो सकते हैं, ये मल्टीप्लायर्स आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। सो L, M, N आर एक्चुअली दी फंक्शंस, आर दी फंक्शंस। फंक्शन मतलब क्या है कि आप l इक्वल टू एक्स भी ले सकते हो, आप m इक्वल टू वाई भी ले सकते हो, आप n इक्वल टू जेड भी ले सकते हो, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो 2x 3y 4z, एनीथिंग यू कैन असाइन एनी वैल्यूज। हियर यू कैन असाइन एनी वैल्यूज टू l, m and n, okay. So just choose the multipliers l, m, n such that l into p means that l into denominator p plus m into q plus n into r, this वैल्यू मस्ट बी 0। ऐसे ही मल्टीप्लायर्स आपको फाइंड करने, ठीक है। तो जस्ट फाइंड द मल्टीप्लायर्स l, m, n सच दैट l into p plus m into q plus n into r is equal to 0। जैसे आपको ये मल्टीप्लायर्स मिल जाते हैं, आपका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन वो क्या होता है, ये अलग अलग है, मतलब ऐसे पहले कैलकुलेट करने में सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, देन योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज l into dx plus m into dy plus n into dz equal to 0। दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। आप देखो ये स्टेप्स कैसे याद रखने। फर्स्ट फाइंड द मल्टीप्लायर्स l, m, n which satisfies this condition, then your solution is l into dx plus m into dy plus n into dz equal to some arbitrary constant, ठीक है। now repeat the same step again, ना, repeat the same step again, we find one more set of multipliers l dash, m dash, n dash, okay, which satisfies this condition, then your solution is l dash dx, m dash dy, n dash dz equal to c1, ठीक है। ये आपके मेथड है। सो इस मेथड में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो मल्टीप्लायर्स आपको कैलकुलेट करने, आपको वो आइडेंटिफाई करने, देन ओनली विल गेट दैट जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो विल डू दैट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये शायद टॉपिक कवर हो जाएगा, दैट इज द लास्ट पार्ट फ्रॉम यूनिट 1, ठीक है। सो विल मेक दैट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।